and I know many students who are interested to go abroad for higher education, but many times they don't do it, citing reasons, let's say for example, financial issues or any other similar reasons. But let me tell you, there are lots of opportunities, there are lots of fellowships, and there are lots of scholarships available. Using those resources, you can go to any university, any college across the world without paying a single penny from your pocket. So, throughout my presentation, I am going to talk about some of these important opportunities. There are more than 20,000 scholarship and fellowships available for which Indian students are eligible. I am going to specifically discuss all those fellowships which are provided by Government of India as well as government of other countries, let's say the destination countries. Next. And this is specifically for India, जैसे मैंने कहा, it's not a new thing, let's say for example, जब हम Ministry of External Affairs के studies and उनके statistics देखते हैं, up to January 2021, there are more than 1 million students, Indian students in 85 countries, means around 10 lakh students already studying in 85 countries. So those are the list of countries जहाँ पे mostly हमारे students पढ़ते हैं, let's say Canada में, US में, UAE में, Australia, UK, China, Germany and France. Even in fact, COVID के just after COVID के time पे या COVID के बाद, we have seen 72,000 students going to this, let's say for example, abroad for education. So ये जितने भी students जा रहे हैं, let me tell you, ये सब लोग, majority of these students, they go through scholarships, they go through fellowships. ये सब opportunities available हैं, but the problem is that आज के time पे जहाँ पे access to information has become very easier, but unfortunately, see, as I said, there are lots of opportunities, almost more than 20,000 fellowships, scholarships हैं, but किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, let's say for example, ऑक्सफोर्ड आपको जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, कोलंबिया जाना है, so उसके लिए कुछ basic requirements हैं. बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाने के लिए maybe you may not meet these requirements, but कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में if you want to get yourself placed, so उसके लिए जैसे there is English proficiency एक टेस्ट है, IELTS, जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के यूनिवर्सिटी से मांगा जाता है, कॉलेजेस में मांगा जाता है. इसी तरह से TOEFL, टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, US और कनाडा में मोस्टली ये लोग मांगते हैं TOEFL. तो इस टेस्ट को आपने क्वालिफाई करना है तो अच्छे स्कोर से. दैट हेल्प्स यू to get these scholarships or to get admit in a very good or prestigious university. कुछ जनरल एग्जाम्स हैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे US में GRE है या GMAT है, तो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है to get into, let's say, Columbia University, to get into any other good university in Europe, US or elsewhere. Some of the important documents जो आपके पास होने चाहिए, letter of recommendation, it helps a lot. जैसे for example, आप किसी अपने ही होम कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जिस प्रोफेसर्स के पास पढ़ रहे हैं या आपने कहीं काम किया हो, so उस इंस्टीट्यूशन या उस इंडिविजुअल से you should have a very strong recommendation letter जो आपके एडमिशन में या स्कॉलरशिप में हेल्प करता है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जब सिलेक्शन में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप क्यों आना चाहते हैं, वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी एकदम क्लियर, एकदम नेचुरल, राइट. मतलब ये आपने मतलब एकदम से क्लियरली बोलना है कि क्यों आना चाहते हैं, क्यों आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, क्यों आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं. तो यू नीड टू राइट ए वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट. एंड लास्टली CV, और CV के साथ में मैंने स्ट्रॉन्ग इसीलिए कहा है क्योंकि आपका CV हमें हमेशा लगता है कि एकेडमिक्स ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू एकेडमिक्स, पर उतना ही चलेगा, आपके मार्क्स ही चलेंगे, आपकी डिग्रीज नहीं. मैंने आपको पहले कहा कि आपके सिर्फ मार्क्स एंड डिग्रीज आपको कहीं नहीं पहुंचा सकते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आपने आपको कितने एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज रखा, कितना वॉलंटियरिज्म किया, कितना इंटर्नशिप किया, कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, ये सब चीज़ें एड्स अप टू योर CV. तभी आपका CV एक स्ट्रॉन्ग CV बनता है. सिर्फ मार्क्स से आपका CV स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, ना डिग्री से बनता है. आपको अपने CV में ये सब चीज़ें ऐड करना पड़ेगा. उन स्टूडेंट्स को यूजुअली प्रेफर, कितना प्रोएक्टिव है, आपने आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है,
रेगुलर एकेडमिक्स के साथ साथ कितना कुछ नया अलग से करने की कोशिश की है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, जिनके हेल्प से यू कैन गो टू एनी फॉरेन कंट्रीज या यूनिवर्सिटी में। एक टाइप के स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, या आप जिस देश के हैं, जिस कंट्री के हैं, वहाँ का गवर्नमेंट आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप देता है, जिसके हेल्प से यू कैन गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। नंबर 2, डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब जहां आप जाना चाहते हैं वहां के भी गवर्नमेंट दे गिव फेलोशिप्स एंड स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। सो यू कैन अप्लाई फॉर बोथ। यहाँ से जो इंडियन गवर्नमेंट से जो भी इंटरनेशनल फेलोशिप्स हैं, ओवरसीज फेलोशिप्स हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो उसी तरह से जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं तो वहाँ का देयर इज दिस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। आप यूके जाना चाहते हैं, देयर इज दिस शेवनिंग स्कॉलरशिप, है ना। तो आप तुर्की जाना चाहते हैं, देयर इज टर्की स्कॉलरशिप। सो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट्स भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है और आपके अपने गवर्नमेंट भी आपको स्कॉलरशिप देता है, जिसको यूज करके यू कैन गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। Number 2, just as Dr. Smanla, he mentioned during his presentation, universities, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेलोशिप स्कॉलरशिप देते हैं। और जितने स्कॉलरशिप्स के मैंने बात किया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर एलिजिबल फॉर मोर देन 20,000 स्कॉलरशिप्स, और इसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ के पास है। 50% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सब यूनिवर्सिटीज़ से मिलता है। सो मान लीजिए आपको किंग्स कॉलेज जाना है, आपको ऑक्सफोर्ड जाना है, गो टू देयर वेबसाइट इंटरनेशनल स्टूडेंट सेक्शन में, वहाँ पे इस टाइप के फेलोशिप स्कॉलरशिप्स होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन अप्लाई। And lastly, there are lots of trusts, there are lots of NGOs, there are lots of foundations. They support specifically students who are coming from very geographically isolated areas, who are coming from vulnerable groups, let's say for example tribal communities, who are coming from conflict regions, let's say for example border areas. So उस टाइप के institutions, organizations हैं जो उस टाइप के unprivileged students से youth को support करता है, ताकि वो भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह, दूसरे यूथ की तरह they can also go to good universities and colleges abroad. So ये कुछ 3 important sources हैं जहाँ से you can get scholarships and fellowships. When I say scholarship and fellowships, जितने भी scholarships and fellowships की मैं बात करूँगा, it's not only your tuition fees. They pay for your travel, they pay for your living expenses, they pay for your visa, they pay for everything. Next. So government of India का specifically for ST students, national overseas ST scholarship, this scholarship is only for tribal students given by Ministry of Travel. ये हर साल आता है। इसमें they support post graduate education। मान लीजिए आपको मास्टर्स, MA, MSc करने जाना है, या PhD करने जाना है, या पोस्ट डॉक करने जाना है। टोटल दे गिव 20 awards, right? So let's say for example आप में से अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, you can apply for this Ministry of Travel का overseas scholarship. और डिटेल्स I'm not getting into सारे डिटेल्स पे, but you can go to their website and see क्या किस टाइम पे आता है, क्या चीज़ें they support it. But it's one of the very good scholarships, specifically for tribal students, to go for overseas education. Next. Ministry of Social Justice and Empowerment, they also give scholarship for overseas education. जैसे ट्राइबल में there were 20 awards, यहाँ Ministry for Social Justice में they give 100 awards. इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 90 हैं, nomadic and semi-nomadic tribes के लिए there are 6 scholarships. Artisans के लिए 4 हैं. So they also this scholarship support for your master's program as well as your PhD studies. So again you can go to their website for more details. Next.
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम हो बुद्धिस्ट हो हम सब लोग इस फेलोशिप के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं. इट्स कॉल्ड पढ़ो परदेश स्कीम. ये भी मास्टर्स एमफिल पीएचडी ये सारे कोर्सेज को सपोर्ट करता है सो दैट यू कैन गो टू एनी गुड टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. नेक्स्ट. So these are fellowships mostly provided by the destination countries. UK का one of the prestigious scholarship है for high studies. It's called Shivning Fellowship. It's not only for students but also for mid-career professionals के लिए भी so that they can also go for refresher courses, short-term training courses के लिए. It's the fellowship of UK government. It supports everything, provides you living expenses, tuition fees, as well as helps you in identifying universities, colleges as per your interest and your expertise. Online application होता है. It's completely online and इसमें ये इनका website है. You can go to their website for more details. Commonwealth scholarship again for students from Commonwealth nations. India is again one of the Commonwealth countries, so you can also use this scholarship for high studies, mostly for postgraduate and PhD studies. It is fully funded. Fulbright Fellowship is one of the prestigious fellowship of United States provided by US government. It supports again after education, masters, PhD, postdoc, but at the same time short-term training courses के लिए they provide this fellowship. Tuition fees, living allowances, your return flight, everything online होता है. So you can completely online. You need not to be, let's say for example in Delhi or elsewhere. You can apply and for this scholarship Leh में बैठ के Kargil में बैठ के and give a very good let's say for example try to get this opportunity. German government का this is again one of the prestigious fellowship. It's called DARS fellowship. जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे जो इंटरनेशनल फेलोशिप्स की मैंने बात करी इसी तरह से ये भी आपके बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जर्मनी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाना चाहते हैं सपोर्ट से. So what see the point is all these information are available online. So we need to use our gadgets to get ourselves aware or also disseminate this information to other young aspirants ताकि जो interest हैं they can try for it and go for it. Next. ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का एफिल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है मास्टर्स डिग्री पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के लिए. Swedish Institute Fellowship given by Government of Sweden. Personally I was a part of this fellowship in 2014-15. It's a very good opportunity. And they again, as I said, they usually prefer you coming from very far-flung areas, and we fit the case. We are tribals, we are geographically isolated. We come from border districts. So जितने भी international scholarships and fellowships हैं, वहाँ पे आपका जो chances 50% already आपका जो background है, आप जहाँ से आते हैं, वो चीज़ आप बहुत ही support करता है. So what I'm saying is you should try for it. मतलब अगर आप try करेंगे, I'm pretty much sure you'll get through it. Asian Development Bank and Japan scholarship given by Government of Japan and Asian Development Bank, again fully funded for masters के लिए. They usually call for applications. That's their website www.adb.org. Asian Development Bank के website पे जाएंगे तो get all the details. Global Korea scholarship. Again, scholarship given by Government of Korea. 8 Indians के लिए 8 fully funded scholarships हैं. It mostly supports undergraduate degree. मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग who have just completed their schooling, they can try for this Korea scholarship. And I've seen lots of students going for this scholarship, especially from UT of Kashmir, Jammu, Delhi से. Turkey graduate scholarship है by Government of Turkey.
अगेन सपोर्ट बैचलर्स के लिए, बिकॉज दूसरे जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आपने देखा था मोस्टली सपोर्ट हाई स्टडीज ना, मास्टर्स पीएचडी पोस्ट डॉक, जो कोरिया वाला स्कॉलरशिप है या टर्की वाला स्कॉलरशिप है, दे आल्सो सपोर्ट बैचलर प्रोग्राम. सो अगेन a very good opportunity. You don't need to pay single penny. सब कुछ if you are a good candidate and अगर आप अपना CV को जिस तरह मैंने कहा उसको build up करेंगे, not restricting yourself only to academics, but academics के साथ साथ you try to engage yourself in lots of other activities, be it internship, volunteership. So ये सब चीजें आपके स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस को बढ़ाता है. Next. जैसे as I said before कि कुछ scholarships which are provided by trusts and NGOs, उसमें सबसे जो reputed scholarship it's called Rhodes scholarship. 5 Indian students को इसमें 5 Indian students के लिए special scholarship multi seats हैं. They get it allocations and these students they get an opportunity to study at Oxford University. Why not? Let's try. Go for it. मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे या ऑब्वियसली यू शुड हैव अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, बट एट द सेम टाइम आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, दिस थिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन योर सिलेक्शन. सो आई थिंक वी शुड ट्राई फॉर इट. अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, व्हाई नॉट. So I'll conclude my presentation here. There are lots of other fellowships, but idea है कि आप लोगों को एक glimpse देना था कि बहुत सारी चीजें available हैं. All this information मैंने खुद नहीं बनाया, it's already available online. हमें थोड़ा effort लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीजें available हैं which we can use for ourselves. आप अपने लिए करते हैं, हमारा स्टूडेंट कोई जाके ऑक्सफोर्ड से कोई क्वालिफिकेशन लेके आता है, so it's not only for it's not going to be a contribution for yourself or for your family. आज हम अभी भी उस लेवल पे हैं. ये कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे लद्दाख के लिए होता है. We are still at that stage. हमारा कारगिल का लेकर कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड पे होना, it's a representation for Ladakh. So I think it's very important, and I always say this to my students. A very important line of Allama Iqbal: it's determination, not dreams, that succeeds in life. Thank you so much.